हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आज का हमारा जो टॉपिक है ना, इट्स अबाउट एक्सटेंडिंग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक, सबसे पहले हम ये जो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, उसको हम रिकॉल करेंगे। आपको पता होगा a function acting between two metric spaces is said to be uniformly continuous if for each epsilon positive you can find a delta positive, and the delta should depend upon only on epsilon in such a way that whenever the points are delta close their images must be epsilon close. मैं पहले ही लिख लेता हूँ एक दफा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी if we have two metric spaces xd and y sigma and sorry, let this and this be two metric spaces and f from x into y be a function, then this function f is said to be uniformly continuous if and only if for each epsilon positive there exists a delta positive, and delta depends only on epsilon, such that the distance between the images fu fv, this will be less than epsilon whenever the points u and v are delta close. ठीक, this is uniform continuity. अब ये जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, इनकी कुछ रिमार्केबल प्रॉपर्टीज होती है। अभी जिसमें यहाँ पर अभी हम इंटरेस्टेड है वो ये है कि दैट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस जो है दे प्रिजर्व द Cauchy character of a sequence. मतलब if you have a Cauchy sequence and a uniformly continuous mapping, then the uniformly continuous mapping will preserve the Cauchy nature of the sequence. That means the image of the sequence under image of a Cauchy sequence under a uniformly continuous map is again a Cauchy sequence.
This is not necessarily true for an ordinary mapping. In fact, it's not true even for continuous mappings, which are not uniformly continuous. For example, अगर आप ये example लेंगे, you consider f from clo open 0 1 and r defined by this rule fx equal to 1 by x, ठीक, and इसके बाद आप एक sequence consider करिए xn running from 1 to infinity where xn is 1 by n for n and n. And clearly, chunki ye jo sequence it converges to 0, so it must be a Cauchy sequence. Now, if you transform this sequence xn under this f, आपको क्या मिलेगा? अगर आप इसे देखेंगे fxn and running from 1 to infinity, this will be what? fxn is 1 by x, fx is 1 by x. So fxn will be 1 by xn as n runs from 1 to infinity, right? What's xn? xn is 1 by n, so 1 by xn will be n. So this is n, and as n runs from 1 to infinity. And this is not a Cauchy sequence. xn is a Cauchy sequence, however its transform under f is not a Cauchy sequence, even though this f is a continuous function, because it has a discontinuity. Otherwise it has a discontinuity at 0, but 0 is not in the domain, so it's continuous. So that means even a continuous function may fail to take a Cauchy sequence to a Cauchy sequence. It may fail to preserve the Cauchy nature. But fortunately, uniformly continuous functions always preserve the Cauchy nature of a sequence. That means if f is uniformly continuous and xn is Cauchy and xn lies in the domain of f, then fxn will also be a Cauchy sequence. ये आप इजीली देख सकते हैं. इनफैक्ट आपको बस डेफिनेशन का ही इस्तेमाल करना है. You have to use the definition of a Cauchy sequence and definition of uniform continuity. ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ अभी, इसे आप ट्राई करिएगा. Let xd and y sigma be two metric spaces This is exercise 1. इसके बाद मैं आपको एक और एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ. So this is exercise 1 and f from x into y be uniformly continuous. Full stop. If xn already from 1 to infinity is a Cauchy sequence in xd, then fxn already from 1 to infinity, this is a Cauchy sequence in y sigma. That means a uniformly continuous function. Then show that, क्योंकि आपके लिए exercise है, show that this is a Cauchy sequence in y sigma. That means a uniformly continuous function, it takes Cauchy sequences to Cauchy sequences.
आपने कुछ नहीं करना, you just need to use the definition of uniform continuity and definition of this, what we mean by a sequence to be a Cauchy sequence. आपको बस ये दो चीजें इस्तेमाल करनी है and you'll get this. अब एक और चीज जो मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं आपको एक और एक्सरसाइज दूंगा इसके बाद, ये भी आप खुद देखेंगे, ये भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. इनफैक्ट इसकी फीलिंग मैं आपको ना ऐसे भी देख सकता हूँ. सपोज you are in a metric space xd. Let's suppose this is your x, और ये मान लीजिए we have 2 points, say x and say u and x. ठीक. Now suppose there is a sequence xn and running from 1 to infinity in x such that xn converges to x. That means these points are these xn's, they are converging to this x. In the same way, suppose there is another sequence un and running from 1 to infinity in x such that un's converge to u. That means these un's, they converge to this point u, right? अब इसके बाद if I ask you what will be this, तो यहाँ basically इस तरह की you have two sequences x1 x2 x3 so on. These xi's, they converge to x, and we have this sequence u1 u2 u3 so on, and these ui's, they converge to u. Now this is my question for you. Can you guess what will be this? If I take the distance between x1 and y1, the distance between x2 and y2, then distance between x1 u1 x2 u2 x3 u3 and so on. I want to compute these distances. Distance between x1 u1, distance between x2 u2, distance between x3 u3 and so on. And I'm interested in the limit. क्या आप मुझे बता सकते हैं what will be the limit as n goes to infinity d of xn comma un? Xn is going to x, un is going to u. X plus. We are interested in this limit. We are interested in the limit of these distances, dx and un. Zero. नहीं, zero कहाँ होगा? xn's are going to x, so they are accumulating at x. un's are accumulating at u. So what will be? X minus u. नहीं, it will be. कोई और try करना चाहेगा? dxu. Exactly, this will be dxu. ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, इसको आप इजीली दिखा सकते हैं. इसके लिए आपको ये करना है. अगर आप ये लेंगे mod dxn un minus dxu, this is equal mod dxn un minus dxn u plus dxn u. यहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया, आई एम जस्ट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, राइट. और उसके बाद ये अपनी जो यहाँ ये टर्म है dxu, इसे आप लिखेंगे.
minus dxu, right? So this is, now you'll use the triangle inequality for the modulus. आप इसे देखिए as a, इसे b, then this is mod a plus b, which is less than or equal mod a minus b. Sorry, mod a plus b. So this is mod d xn un minus d xn u plus mod b xn u minus d xu. अब यहाँ और यहाँ दोनों में आप रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे. द रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर d, अगर आप वो यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए यहाँ xn कॉमन है तो ये एब्जॉर्ब होगा, सो दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू d ऑफ un and u. Whereas यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ u और u कॉमन है तो ये एब्जॉर्ब होगा, सो दिस विल बी d ऑफ xn, x. Now what happens to these distances as n goes to infinity? Chunki un's are going to u, so this must go to 0. Same is the case with this. xn's are going to x, so this must go to 0. So this plus this, it goes to 0 as n goes to infinity. Now modulus goes to 0 means actually the quantity inside the modulus goes to 0 as n goes to infinity, because इसके जो left hand side है वहाँ पर ये है. The left hand side we have this. In fact यहाँ actually squeeze principle का इस्तेमाल होगा. So that means this minus this goes to 0 as n goes to infinity. That is limit n goes to infinity d of xn comma un is d of x comma u. है ना? This quantity in the limit goes to 0. So that means the quantity inside the modulus must go to 0. So that means in the limit this is this. वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ. और इसको मैं यहाँ कुछ further भी कर सकता हूँ. I can also write this as d of, अब ये देखिए what is x? x is the limit of xn's. तो मैं इस x को ऐसे भी लिख सकता हूँ, limit n goes to infinity xn. Same is the case with this u. u is what? u is the limit of un's. So therefore ये जो u आप यहाँ देख रहे हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, limit n goes to infinity un. So that means फिर आप ये जो हमारा ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं फिर, limit n goes to infinity d of xn un is equal to d of limit n goes to infinity xn limit n goes to infinity un. So in a way you are taking this limit inside d. Actually this is possible because d, the metric, is a continuous function. ठीक है, ये आप याद रखेंगे अब आज के बाद. तो अब मैंने ये खुद ही दिखाया आपको. तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ से देखी वो असल में ये है. इफ इन अ मेट्रिक स्पेस, मैं ये पहले लिख रहा हूँ, उसको हम फॉर्मली रिकॉर्ड करेंगे जो अभी हमने देखा. उसको अब आप एज ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे. इसीलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज देना चाहता था, लेकिन अब ये खुद ही दिखाया. If xt is a metric space and xn and running from 1 to infinity, comma un and running from 1 to infinity are two sequences in xt such that xn's converge to x and un's converge to u as n goes to infinity,
then limit n goes to infinity d of xn un. This is actually same as d of x comma u, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ d of limit n goes to infinity xn comma limit n goes to infinity un. याद रखेंगे आप आज के बाद. Now let's come to the जो हमारा ना मेन टॉपिक है आज का, एक्सटेंडिंग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. इसकी पहले मैं आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दूंगा. आप ये इजीली देख सकते हैं. इफ f is uniformly continuous on a and b is a subset of a, then f is uniformly continuous. I'm assuming that this a and this b are non-empty. Then f is uniformly continuous on b as well. Do you agree with this? If it is uniformly continuous on A and B is a part of A, then it must be uniformly continuous on B as well. ठीक? So that means superset से आप subset तक जा सकते हैं. If it is uniformly continuous on the superset, then it must be uniformly continuous on every subset. The question is, what about the other direction? मतलब, can you go from subset to superset? If it is uniformly continuous on B, can you say that it is uniformly continuous on A? The answer in general is no. Because as such यहाँ ना इस तरह की कोई relation नहीं है between B and A. A can be any superset of B. If we take a special superset of B, जो आपको पता होना चाहिए. जब आप supersets of B की बात करते हैं ना, तो एक superset necessarily आपके जहन में आना चाहिए. आप guess कर सकते हैं क्या है वो? The closure of B. Fortunately, इस केस में हमारे पास एक रिजल्ट अवेलेबल है और मैं वही यहाँ आपके सामने स्टेट करने जा रहा हूँ. Basically, if under certain conditions you can extend uniform continuity from a set to its closure, and that too uniquely. ये important है इसमें. आप uniform continuity को extend कर सकते हैं और that too uniquely. That means there is one and only one way of doing this. मैं डायरेक्टली अभी थ्योरम स्टेट कर रहा हूँ. We'll record this result as a theorem. Actually, it's related to जो आपने real analysis में एक theorem पढ़ी होगी, which is called the मेरे पास थी वो यहाँ पर, ये continuous extension theorem. It states that a function f is uniformly continuous on an interval ab if and only if it can be defined at the endpoints a and b in such a way that the extended function is continuous on closed ab. बेसिकली यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ना, इफ एंड ओनली इफ, इसमें एक डायरेक्शन तो ओबियस है. कैसे? इफ इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड AB, by Heine-Cantor theorem we know that it must be uniformly continuous on closed AB, and uniformly continuous on closed AB means uniformly continuous on open AB, because open AB is a subset of closed AB. तो एक डायरेक्शन तो ओबियस है इसमें. जो नॉन ट्रिवियल है इसमें वो है द रिवर्स डायरेक्शन. मतलब if it is uniformly continuous on open AB, how can you say that it is continuous
And in fact, it will be then later on uniformly continuous, because continuity on AB means uniform continuity by Heine-Ganter theorem. यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करने, in fact it will be a generalization of this result जो अभी ना मैं लिखने जा रहा हूँ result, it will be a generalization of this continuous extension theorem. उसका statement आप रिकॉर्ड करिए. Let xt be a metric space and y sigma be a complete space. xd कोई भी metric space हो सकती है, लेकिन जो y sigma है, it has to be a complete space. Full stop. Now if A be a non-empty subset of X and f from A into Y be uniformly continuous, then there exists a unique function G from A closure into Y such that there exists a function and the function is unique, और इसमें कुछ properties भी हैं. पहली property, just like f, this G is also uniformly continuous. G is uniformly continuous on A closure, और जो दूसरी चीज होगी इसमें वो ये है, Gx will be same as fx, and this will be true for all x's in A. That means whenever x comes from A, G and f agree. G and f agree at points of A. By the way, if I ask you what is the interpretation of this, इसका मतलब क्या है असल में? अब ये और ये जो है यहाँ, अगर आप इन्हें कलेक्टिवली देखेंगे तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहाँ आप देख रहे हैं domain of G is A closure, right? A closure contains A. A is the domain of F. So that means domain of G, it contains domain of F. So that means G has a bigger domain. And G and F agree at the points of domain of F. इसका मतलब क्या है फिर? It means basically, आप सुन रहे हैं मुझे? Yes, sir. क्या है इसकी, अगर मैं आपसे पूछूंगा ये और ये अगर इन्हें कंबाइन किया जाए तो वहां से आप क्या कंक्लूड करेंगे? It means G is an Superset. superset. कोई है आप में से जो मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या है? मतलब when you say G is defined on A closure and F is defined on A, G and F agree at A. It means G is an extension of the function F.
ये जो f है which was defined on A, ये theorem basically आपसे कह रही है कि you can extend this f, you can find a g and g is an extension, means basically you can extend this f in a unique way to a closure while maintaining its uniform continuity. This is important क्योंकि g remains uniformly continuous. Let's come to the proof now. Let x in a closure be arbitrary. ठीक? Then there exists a sequence. There exists a sequence xn, n running from 1 to infinity in A such that xn's converge to x as n goes to infinity. आप बता सकते हैं कैसे? इसका रीजन क्या है? X belongs to a closure. That means it must be limit point. We know that closure points are basically limits of convergent sequences. Closure points of A are basically the limits of the convergent sequences in A. So X is a closure point of A, so it must be a limit, rather the limit of a convergent sequence in A. There must be a convergent sequence in A which converges to this X. ठीक? We also know that every convergent sequence is a Cauchy sequence, since every convergent sequence is a Cauchy sequence. It follows what? It follows xn running from 1 to infinity is a Cauchy sequence in A, because the sequence is in A. Full stop. Consequently, ये मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ क्यों? Consequently, fxn n running from 1 to infinity is a Cauchy sequence. Cauchy sequence पर हम बाद में आएंगे. मुझे आप पहले बता सकते हैं ये सीक्वेंस कहाँ पर होगी? ये किस स्पेस में होगी? इन Y. it will be in Y sigma. So it's a sequence in Cauchy it's a sequence in Y sigma. But मैं आपसे कह रहा हूँ it's a Cauchy sequence. मुझे आप बता सकते हैं कैसे? F is uniformly continuous. F is uniformly continuous and uniform continuity preserves Cauchy nature of. ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी. So it's a Cauchy sequence in Y sigma. अब Y sigma के बारे में क्या जानते हैं आप? आप ऊपर स्टेटमेंट में देखिए. That's complete. It's a complete space. space. Complete अगर है तो फिर क्या होगा? इसकी एक लिमिट होगी, है ना? It must be convergent. मैं वही अब लिखने जा रहा हूँ. थोड़ा सा ऊपर कर ले हम. In view of the fact that Y sigma
कोई ऑर्डिनरी स्पेस नहीं, इट्स अ कंप्लीट स्पेस. It then follows that we can find a y, क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट है तो कोई पॉइंट होगा वहां स्पेस में जिसको ये कन्वर्ज करती होगी. So we can find a y in y such that what? Such that limit n goes to infinity fxn, it will be equal to y. Full stop. ठीक है. Thus we have shown that. अब अगर आप देखेंगे, अगर आप इसे अब समराइज करेंगे यहाँ तक अभी तक जो हमने काम किया, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? We started from an x in a closure. Let me draw a picture for this. Suppose this is x. Suppose this is your a. Let me draw a manually. Okay, I don't know whether this a is closer or some boundary points of a may be included and some may not be. Let's suppose this is a. ठीक, हमने क्या किया था? हमने एक पॉइंट लिया था x from the closure of a. Let's suppose this is x. अब हमने इवेंचुअली हासिल क्या किया यहाँ पर? We started with x in a closure and we got a y in y, a little y in capital Y. So that means corresponding to this little x in a closure, we got what? We got a point little y, और ये little y कहाँ पर है? In capital Y. ये किस चीज की तरफ इशारा हो रहा है यहाँ पर? It's a for this x in a closure, you got a y in y. So it indicates basically there is some type of relation involved in this discussion. ठीक, हम उसी को टारगेट कर रहे हैं यहाँ, उसी रिलेशन को. Thus हम इसको देखेंगे. We have shown that for an arbitrarily chosen x in a closure, there exists a y in capital Y full stop. This actually sets up a relation जिसकी मैं बात कर रहा था अभी. This sets up a relation from where to where? आप बता सकते हैं? From a closure into what? Now we claim that this relation is actually a function. आप देखिए, याद करिए, हमें basically सबसे पहले दिखाना है कि there exists as a function. तो अभी हम existence के लिए काम कर रहे हैं. Relation आ गई. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि this relation is actually a function. आपने पता होना चाहिए what's a function. Function is a relation wherein every element in the domain has a unique image.
ठीक है ना। अब यहाँ आपकी इमेज क्या आ रही है, इट्स y, तो मुझे दिखाना है कि दिस y इज यूनिक, मतलब जो x हमने चूज किया था ना एक क्लोजर से, corresponding to that x, this y corresponds uniquely. ठीक, अब अगर आप यहाँ देखेंगे ये जो y है ये इसमें किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है इस डिस्कशन में, इट्स व्हाट इट इज दिस लिमिट, और ये लिमिट में आप किन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर यूजिंग xn. व्हाट्स xn? It's a Cauchy sequence, it's actually a convergent sequence in A which converges to x. ठीक, now if suppose this y changes with the sequence this, मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ, if suppose this y it changes with the sequence, मतलब ये sequence change करने से अगर ये y change होता है, so that means that would actually mean this relation जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, it must be one to many, and one to many relations are not functions. So that means this y it must not change by changing this sequence. That means this y it must be independent of the choice of the sequence. यही मैं आपको अब दिखाऊंगा. सबसे पहले आप ऐसे लिखिए, we claim that this relation from A closure into y is a function as well. ये पहले हम क्लेम कर रहे हैं. To this end, अब मीन्स ये करने के लिए, to this end we must show y is independent of the choice of the sequence xn from 1 to infinity converging to x. We must show that this y has nothing to do with the selection of this sequence. हालांकि y में आप देख रहे हैं कि ये it has a role, but मतलब it's actually मतलब ये एक रोल तो है वहां पर, बट ये ऐसा रोल भी नहीं है कि दैट दिस y will change by changing the sequence. It means ये जो y है it's actually unique in this sense. ना अगर आप देखेंगे कि y doesn't change by changing the sequence. अगर आप यहाँ देखेंगे ना, बेसिकली जो आप ये कर रहे हैं ना सीक्वेंस इन ए, बेसिकली आप ले रहे हैं पॉइंट्स विच आर गोइंग टुवर्ड्स x, और उन पॉइंट्स की इमेज आप देख रहे हैं. So that means basically यहाँ क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि when I say that y is independent of the selection of the sequence, it means that the limit of f at x it exists. मतलब it is path independent. It doesn't matter which path you choose. xns आपको एक path provide करता है to go towards x, और यूजिंग दोज एक्शंस आप y कंप्यूट करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा दैट y जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. चाहे आप कोई भी पाथ क्यों ना ले,
eventually you'll get the same thing. Basically, y measures what? It actually measures the limit of f values as the input goes towards x. अगर आप देखेंगे ना, अगर आप इसे एनालाइज करेंगे इस y को, ये असल में कुछ नहीं, it's actually the limit of f values as the input goes towards x. Now, goes towards x, it can go towards x in uncountably many ways, right? ठीक है ना? और मैं आपको दिखाऊंगा the path, the way, the direction is immaterial. अब आप क्या करिए, let ऐसे लिखिए, एक मिनट, in this direction let un and running from 1 to infinity be some other sequence in A such that uns also converge to x. मतलब आप कोई और different path ले रहे हो, full stop. Then as above, जैसा कि हमने ऊपर xns के साथ किया था, अगर आप वही चीज uns के साथ करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर, then as above आप easily देख सकते हैं that f of un, this sequence, is convergent. इसका वही रीजन है जिस तरह से हमने ऊपर देखा था that fxn and runs from 1 to infinity is convergent in y sigma. Basically this sequence is convergent, so it's Cauchy. Cauchy means, and f is uniformly continuous, means f of this sequence will be Cauchy in y sigma. Y sigma is complete, so it means it must be convergent in y sigma. The image of this sequence under f, it must be convergent in y sigma. Full stop. ठीक, अब हम एक और सीक्वेंस यहाँ क्रिएट करेंगे. For each n in the set of natural numbers, we define Zn. इसे अब ध्यान से देखेंगे. Zn is going to be xn by 2 if n is even. अगर n even है तो Zn will be xn by 2 and it will be un by n plus 1 by 2 when n is odd. Then if I ask you what is Zn and running from 1 to infinity, अगर खोल के लिखा जाए, it will be Z1, Z2, Z3, Z4 and so on. And what will be this? What is Z1? जरा मुझे बताइए. Z1 means n is odd, so it will be अब देखिए और मुझे बताइए what is Z1? U1. It will be U. What is Z2? Now this time around n is even, so it will be तो आपको यहाँ से देखना इस रो से. It will be x1. Now what about Z3? U2. It will be U2. What about Z4? X2. X2. मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है. What will be the next term? अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ. U3. X3. हाँ, U3 will be the fifth term, sixth term will be X3 and so on. अगर आप इस सीक्वेंस को देखेंगे, it's a sequence in A, है या नहीं? इसकी जो टर्म्स है, they are either xns or uns, और xns uns दोनों A से आ रहा है, so it's a sequence in A.
मैं वही लिखने जा रहा हूँ. Then Zn equal to this, which is this, is a sequence in A. और एक और चीज, this sequence it converges to, बता सकते हैं आप कहाँ जा रही है सीक्वेंस? कहाँ जा रही है सीक्वेंस? एक्सेंस कहाँ जा रहे हैं? X's are going to X. X. They're going to X. What about UNs? X. UNs are also going to X. तो आप मुझे बताइए ये सीक्वेंस कहाँ जाएगी? X. It must go to X. और कोई सूरत ही नहीं है इसमें. आप चूंकि आप अल्टरनेटिवली यूज कर रहे हैं ना, ये दो कन्वर्जन सीक्वेंसेस की जो टर्म्स है इन्हीं को यूज कर रहे हैं. तो लेटर ऑन जो आप मतलब ना, जब आप काफी आगे जाएंगे इस सीक्वेंस में कह रहा हूँ, इस सीक्वेंस में जब आप काफी आगे जाएंगे, वहां जो टर्म्स होंगी, क्योंकि आपको पता है या तो वो इस फॉर्म की होंगी, यूएन फॉर्म या एक्सएन फॉर्म, बट इन ईदर केस दे विल बी क्लोज टू एक्स बिकॉज यूएन्स एज वेल एज एक्सएन्स दे आर कन्वर्जिंग टू एक्स. सो लेटर ऑन जो टर्म्स है आपकी वो असल में एक्स पर एक्यूमुलेट करेंगे. सो एक्स इज द लिमिट, इट्स कन्वर्जिंग टू एक्स, converging to x. So again we have what? We have a convergent sequence in A, right? And again as before, या हाँ as before ही सही है. अगर आप इसे देखेंगे, अगर आप इस सीक्वेंस की जो इमेज है उसे देखेंगे, f z1 f z2 f z3 f z4, this is convergent in y sigma, है ना? Because this is convergent. Convergent means it's Cauchy. F is uniformly continuous, so it must take this sequence to a Cauchy sequence. That means the image of this, rather, or the transform of this Cauchy sequence under F will be a Cauchy sequence because F is uniformly continuous. So therefore, it's a Cauchy sequence in Y sigma. Y sigma is a complete space, so it is convergent in Y sigma. ठीक है ना? And therefore, ये मैं आपसे पूछूंगा क्यों. लिमिट n goes to infinity z 2n minus 1. This will be same as limit not z, sorry, this f of z, f of z 2n minus 2, and this will be same as limit n goes to infinity f of z 2n. These two limits will be same. बताइए क्यों? Subsequences. Exactly, these are subsequential limits. Subsequential limits of a convergent sequence are always same. कोई भी subsequential limit आप लीजिए convergent sequence की, वो सारी की सारी same होंगी. They return the same value, which is the limit of the sequence. So this and this will be same. Now what is this? यहाँ आप कौन सी subsequence का इस्तेमाल कर रहे हैं? Subsequence which is made up of terms occurring at which places? 2n minus 2 is what? Odd places. और odd places पर कौन सी terms आ रही है? वहाँ ui's आ रहे हैं. और यहाँ से this is the subsequential limit
of basically the subsequence which is made up of terms which figure at the even places. और even places पर कौन सी terms आ रही है? ठीक है ना? Excise, yeah. So क्या है ये फिर? That is, जिसको मैं डायरेक्टली अब ऐसे लिख सकता हूँ, that is limit n goes to infinity f at, चूंकि ये ऑड है और ऑड पर हमारे un आ रहा है और दिस इज इवन प्लेसेस पर हमारे x आ रहा है, सो दिस एंड दिस दे आर सेम. अब इसका मतलब क्या है अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द समरी ऑफ दिस? द लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द सीक्वेंस. चाहे आप सीक्वेंस xn यूज करें या un यूज करें, लिमिट चेंज नहीं होगी. दिस इज y, है ना? सो y इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी, मतलब अगर आप चाहे कोई और भी, अगर आपने कोई और सीक्वेंस अगर आपने इस्तेमाल करी होती तब भी आपको y ही मिलता, आपको कोई नई क्वांटिटी नहीं मिलेगी या कोई नई चीज नहीं मिलेगी. y is independent of the choice of the sequence, so therefore we have a function actually. Hence y is independent of the choice of the sequence xn running from 1 to 50 in a converging to x. That's independent. Thus g from a closure into y defined by this rule, defined by g of x is equal limit n goes to infinity f xn, where x is in a closure and xn running from 1 to infinity is a sequence in A with xn's converging to x. इस तरह से हम ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं. Thus g divided by this is a function. Basically जो ऊपर हमने आर्ग्यूमेंट्स प्रोड्यूस करी या जो हमने प्रोवाइड करी ऊपर आर्ग्यूमेंट्स, वो इस चीज को जस्टिफाई करती है कि दैट दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन बिकॉज इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द सीक्वेंस. दिस लिमिट इज अ फंक्शन. आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? अगर नहीं है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगेंगे इसमें. सर हमारी है लेकिन लिंक नहीं आई अभी. चलिए तब तक कंटिन्यू करते हैं. मुझे आप बताइए यहाँ तक आपको मतलब कोई कंफ्यूजन है? मैं आपको यहाँ भी बता सकता हूँ ना व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस, ये जो हमने दिखाया ना, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और व्हाट इज द नीड ऑफ द शोइंग दैट दिस y is actually the limit. now अगर आप ऊपर जाएंगे your y is nothing but the limit. बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ the limit is actually independent of the choice of the sequence. अब यहाँ जब आप g को डिफाइन कर रहे हैं ना, you are defining g in terms of the limit.
राइट, g at x is equal to this। पहले x कहाँ से आ रहा है, ये एक क्लोजर से आ रहा है। अगर ये एक क्लोजर से आ रहा है तो एक सीक्वेंस नेसेसरीली होगी which will converge to x। एक सीक्वेंस नेसेसरीली आपको a में मिलेगी which converges to x। उसी सीक्वेंस को आपको इस्तेमाल करना है to compute g at x, इस तरह से। और ये लिमिट होगी, why? Because y sigma is a complete space। ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन था ना, अगर लिमिट चेंज अगर सीक्वेंस चेंज करने से ये लिमिट चेंज होती, अगर ऐसा होता, अगर ये सीक्वेंस चेंज करने से ये लिमिट चेंज होती, तो फिर ये g फंक्शन नहीं रहता। इट वुड हैव बीन वन टू मेनी रिलेशन। वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको दिखाया, ये सीक्वेंस चेंज करने से ये लिमिट चेंज नहीं होती। सो इट डजंट मैटर विच सीक्वेंस यू चूज, देयर आर सीक्वेंसेस इन A which converge to X, और कौन सी सीक्वेंस आप सिलेक्ट करेंगे in order to compute G, that is immaterial। But that means G has a concrete rule, इसमें कोई ambiguity नहीं है। There is no ambiguity as far as the rule of evaluating G is concerned। यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। मतलब अगर सपोज सीक्वेंसेस चेंज करने से लिमिट्स डिफरेंट आती, मतलब अगर डिफरेंट सीक्वेंसेस lead to different limits, different sequences these lead to different limits, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम होती। कोई कहता है कि नहीं मेरा ठीक है, कोई कहता नहीं मेरा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ आप कोई भी सीक्वेंस लीजिए, लिमिट विल बी सेम। G is well defined, so it's a function। ठीक है। Observe that for x in A, अगर आपका x A में होगा, अगर आप gx को देखेंगे, it will be what? It will be limit n goes to infinity by definition f at xn, where xn is what? xn running from 1 to infinity is a sequence in A with xn going to x, that means converging to x। अब x कहाँ पर है? It's in A। ठीक। What's f? F is uniformly continuous on A। Uniformly continuous means it's continuous। Now these points xn's, because they are converging to x, so they are going closer and closer to x। So what will be this limit? In fact, we can, आप यहाँ एक property भी use कर सकते हैं continuous functions की। We know that we can take this limit inside, because these xn's, they are converging to x, and x is a point of continuity of f, because f is uniformly continuous on A। So it must be continuous on A, and in particular it must be continuous at this x also। So these xn's are converging to x, and x is a point of continuity of f, so therefore you can take this limit inside the function f। So this is f of limit n goes to infinity x sub n, right? What is limit n goes to infinity x sub n? It's x, so this is f of x। तो क्या देख रहे हैं आप? For x in A, gx and fx, they are same। The second part is done, जो ऊपर आप देख रहे थे ना, ये gx is same as fx for all x's in A, this is done, ये हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें ये भी है, g is also uniformly continuous। Show that, यहाँ पहले लिखिएगा, hence g is an extension। अभी हम n यूज कर रहे हैं बिकॉज अभी यूनिकनेस नहीं आई। लेटर ऑन हम यूनिकनेस भी देखेंगे तो फिर इट विल बी दी एक्सटेंशन। g is an extension of f from, कहाँ से कहाँ? A to A।
To show that this G is uniformly continuous, इस extension की beauty ये है कि that the uniform continuity is maintained. To show that G is uniformly continuous, let epsilon greater than 0 be arbitrary. Since we already know that F is uniformly continuous, it follows we can find a delta positive such that आप F की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करके करिए और मुझे बताइए क्या होगा फिर such that sigma of f of u f of v it will be less than for every epsilon there is a delta. ठीक है, so in particular for epsilon by 2 positive because epsilon is positive, epsilon by 2 will also be positive, right? क्योंकि हमें पता है ना already f is uniformly continuous. Uniformly continuous means for every epsilon positive there is a delta positive. So in particular there will be a delta for epsilon by 2. ये जो delta हम यहाँ ले रहे हैं ना, we'll assume that this delta corresponds to not epsilon. Assume that it corresponds to this epsilon by 2. Because for every epsilon there is a delta. So in particular for epsilon by 2 also there will be a delta. And I am assuming that this delta corresponds to epsilon by 2. So this will be less than epsilon by 2 whenever what? में से मुझे कोई बता सकता है क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर? D of uv D of uv less than क्या ये सफिशिएंट होगा? क्या ये काफी है इतना लिखना? क्या हमें कुछ और भी यहाँ करना होगा? आपको ख्याल रखना है यहाँ पर f is not defined everywhere. It's defined only on A. So आप यहाँ लिखेंगे whenever u, v are in A with. समझ रहे हैं मेरी बात? Because f is defined only on A. तो ये इसको validate करने के लिए you have to ensure that u and v are coming from A. And by uniform continuity, if they are delta close, their images will be epsilon by 2 close. ठीक है, इसे आप कोई लेबल दीजिए. Let's call it star. अब इसके बाद now for u comma v in A closure. Now this time around u and v will be coming from A closure. First we can find, क्योंकि ये closure से आ रहा है, so we can find two sequences. We can find two sequences. हमने un ऑलरेडी सीक्वेंस इस्तेमाल करी है, तो हम un नहीं कुछ और यहाँ करेंगे अब, राइट? हालांकि आप un भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है दैट वाज अ लोकल वेरिएबल, वो वही यूज हुआ और खत्म हो गया. टू बी ऑन द सेफर साइड हम कुछ और लेंगे. लेट्स सपोज देयर इज अ सीक्वेंस bn running from 1 to infinity, और vn के लिए v के लिए हम लेंगे vn. You can find two sequences bn and bn running from 1 to infinity in A such that bn's converge to u and vn's converge to v as n goes to infinity. ठीक,
Now if अब in addition मान लीजिए the distance between these 2 points जो हमने एक क्लोजर से लिए थे, मान लीजिए इनके बीच में जो दरमियान जो distance है it is less than delta. Now if d of u comma v is less than delta, then हमने देखा ऊपर, अगर आप इसे देखेंगे लिमिट n goes to infinity d of un comma vn किसके बराबर है? un's oh sorry not u, क्योंकि यहाँ u के लिए जो मैंने सीक्वेंस लिया इट्स bn not un. Distance bn comma vn. bn's are going to u, vn's are going to v, so this limit will be, we can take this limit inside d, so it will be d of limit bn, limit vn. Limit bn is u, limit vn is v, so it is d of u comma v. What's d of u comma v? It's less than delta. तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? आप देख रहे हैं कि what's delta? Delta is positive, suppose this is 0, this is delta, और आप देख रहे हैं कि this limit is less than delta. मतलब ये delta से ये कहाँ किस साइड में हो गई? delta के लेफ्ट साइड में होगी, और 0 से नीचे नहीं जा सकती because it's d, so it is between 0 and delta. It can be 0 but it is strictly less than delta. Now if it is less than delta, limit is less than delta, तो इसका मतलब ये नहीं है, आप देखिए this is less than delta, यहाँ full stop. Therefore we can find a positive integer m such that d of bn comma vn, it will be less than delta for all n's greater or equal to m. सही है ये? इसका सिंपल रीजन है बिकॉज दीज थिंग्स, ये जो ये इनकी जो लिमिट है इट इज लेस देन डेल्टा, दे आर एक्यूमुलेटिंग at some point which is less than delta. Suppose this is the limit, मान लीजिए the limit is zeta, so they are accumulating at zeta, so they must cross this delta barrier. तो एक स्टेज नेसेसरीली आना चाहिए where these distance, rather after which these distances are all less than delta. मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि they are accumulating, मैं assume कर रहा हूँ zeta is the limit, ये जो लिमिट है हम यहाँ देख रहे हैं कि it is less than delta, so that means these quantities are accumulating at something which is less than delta, so they must cross this delta barrier. वही मैं लिख रहा हूँ, एक स्टेज नेसेसरीली आना चाहिए जिसके बाद ये सारी क्वांटिटीज, ये सारी डिस्टेंसेस डेल्टा से छोटी होंगी, because they are accumulating at something which is less than delta. ठीक, अब अगर आप देखेंगे ऊपर, अगर आप स्टार को देखेंगे, स्टार में आप क्या कह रहे हैं? स्टार में आप कह रहे हैं कि whenever points u and v are in A with distance less than delta, the distance between their images will be less than epsilon by 2, है या नहीं? अब यहाँ आप देखिए, ये जो bn और vn है, ये किसके पार्ट्स है? bn and vn are terms of these two sequences respectively, n terms, and these are sequences in A. So bn's and vn's, they are coming from A, right? और इनके दरमियान जो distance है, it is less than delta, so they are delta close. So by star, their what? Their f images must be epsilon close. मैं वही अब उप स्टार असल में यहाँ यूज कर रहा हूँ, hence by star
their images, the distance between their images. F images, स्टार में F images की बात हो रही है, BN and FBN. They must be what? Epsilon by 2 close. And they are delta close for n greater or equal to m, so their F images must be epsilon by 2 close for n greater or equal to m. ठीक? Consequently, अब जो मैं लिख रहा हूं ना वो ध्यान से देखिएगा. लिमिट, आप यहाँ क्या करिए, यू आर सेइंग दिस होल्ड्स, ये जो इनइक्वालिटी है दिस होल्ड्स फॉर ऑल n's greater or equal to m. So therefore you can let this n go to infinity because this is valid for all n's greater or equal to m. So you let this n go to infinity and limits will exist because this is sigma और ये लिमिट दोनों exist करती है. Why? Because bn they converge, जो bn's है आपके they converge to u, vn's they converge to v. So sequence of bn's is a Cauchy sequence. F is uniformly continuous, so fbn will also be a Cauchy sequence. Y sigma is a complete space, so it must be convergent. So this limit exists, this limit exists. तो अगर आप यहाँ ये जो n है इसे आप ले जाएंगे towards infinity, आपको क्या मिलेगा? आपको सबसे पहले ये मिलेगा sigma of limit n goes to infinity f of bn comma limit n goes to infinity f of vn. ठीक? This will be what? These quantities are less than epsilon by 2. So in the limit they will be ज़्यादा से ज़्यादा less than or equal epsilon by 2. But what is this limit? U. नहीं, आप पूरा देखिए इसे, आप सही कुछ चीजें मिस कर रहे हैं. ये this is not limit of bn's, this is limit of f of bn's. इसके लिए आप ऊपर g पर आइए. g की डेफिनेशन ये है. g says अगर आपको x पर मेरा वैल्यू चाहिए तो आपको पहले क्या करनी है, you have to create a sequence which in a which converges to x, then compute this limit, तब जाके आपको g वैल्यू मिलेगा. अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर आप g at u कंप्यूट करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले इस डेफिनेशन को देखिए, मुझे बताइए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? You require a sequence. कहाँ पर? In a which converges to u. क्या हमारे पास कोई सीक्वेंस अवेलेबल है in a which converges to u? हाँ, हमारे पास है. We have bn's in a and bn's are converging to u. So g को हम evaluate कर सकते हैं at u, और ये क्या आएगा? g at u will be actually limit, क्योंकि choice of sequence is immaterial, कोई भी सीक्वेंस काम कर सकती है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक सीक्वेंस है, हम उसी को यूज करेंगे. n goes to infinity f of bn. So ये जो लिमिट है ना, this is actually g of u, मतलब ये जो लिमिट है, this is, and the same way what is this limit? अगर आपको g at v चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है? You have to find a sequence which is converging to v, a sequence in a. हमारे पास ऑलरेडी एक सीक्वेंस है इस a में. vn is a sequence in a and vn's are converging to v. हम इसी vn सीक्वेंस को इस्तेमाल करेंगे to evaluate g at v. So g at v will be limit n goes to infinity f at vn, है ना? आप डेफिनेशन देखिए g की. g at x evaluate करने के लिए you have to find a sequence in a which converges to x, और उस सीक्वेंस पर आपने फिर f वैल्यूज कंप्यूट करना है, और उन f वैल्यूज की जो लिमिट होगी that will be your g at x. अब पहले इसको देखिए g कैसे काम करता है. g कंप्यूट करने के लिए आपको एक सीक्वेंस चाहिए. अब नीचे आप g को कंप्यूट कहाँ करना चाहते हैं? v पर.
You require a sequence which converges to V. A sequence in A which converges to V. We already have a sequence in A which converges to V. It is this sequence, V and ये जो sequence है, it's a sequence in A and it converges to V. So we can use this sequence to evaluate G at V. और यहाँ फिर से वो चीज़ ना आपको ज़हन में रखनी है, choice is immaterial. कोई भी सीक्वेंस काम कर सकती है, it doesn't matter कि यहाँ कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे फलां सीक्वेंस चाहिए, नहीं, ये G में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस सीक्वेंस. तो कोई भी सीक्वेंस अगर काम कर सकती है, सो विल यूज दिस V एन सीक्वेंस. तो वहां से आप देख सकते हैं कि दिस लिमिट इज एक्चुअली G ऑफ V. अब ये दो चीजें आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे, आपको बेसिकली G की डेफिनेशन यूज करनी है और कुछ नहीं. सो दिस इज व्हाट दिस इज सिग्मा ऑफ G ऑफ U कॉमा G ऑफ V. नाउ लेट्स समराइज दिस. देखिए मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ. हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, अगर आप देखेंगे हमने एक एप्सिलॉन लिया था. कैसे लिया था? आर्बिट्रेरली लिया था. सो एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी. और फिर मैंने आपको दिखाया फॉर दिस एप्सिलॉन we can find a delta positive. So that means corresponding to this epsilon positive, there is also a delta positive such that if you have u comma v in A closure with d of u comma v less than delta, so that means if you have 2 points in A closure which are delta close, their G images will be what? They will be less than or equal to epsilon and epsilon by 2, and epsilon by 2 is strictly less than epsilon. That means their G images are less than epsilon. So it means what? Thus we have shown that, पहले हम इसे लिखेंगे. We have shown that for each epsilon greater than 0, we can find a delta positive. इसका एविडेंस ऊपर आर्ग्यूमेंट्स में आपको मिलेगा. Such that the distance between G at U and G at V, it will be less than epsilon. That means the images will be epsilon close whenever. कब? U और V कहाँ से लिए थे हमने? Whenever U and V are in A closure with distance less than delta. So whenever U comma V are in A closure with B of U comma V less than delta. And और अगर ऐसे देखेंगे आप, this is precisely the definition of uniform continuity. Stop. Hence G is uniformly continuous on A closure. F is uniformly continuous on A. G is uniformly continuous on A closure. So it's a bigger set because A closure जो है, it is A union boundary of A. So in a way आप ये भी यहाँ कह रहा है कि that अगर if you possess a uniformly continuous function taking values in a complete space, क्योंकि जो कोडोमेन स्पेस है it has to be complete. हमारी assumption में है ये y sigma is complete. एक कोई ordinary function नहीं होना चाहिए. It has to take values in a complete space. अगर ऐसा if it takes values in a complete space, then it can be extended to the boundary points also. मतलब इसके डोमेन में आप डोमेन की बाउंड्री भी इंक्लूड कर सकते हैं. And the function will remain uniformly continuous. Uniform continuity will be maintained in the process of this extension. Because A closure is this. अब हमें क्या दिखाना है इसमें? एक्सटेंशन भी हो गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी हो गई. अब क्या रह रहा है? अभी एक चीज रह रही है, दैट इज द यूनिकनेस. और यूनिकनेस 2 लाइंस का काम है. फाइनली
if possible, suppose f has some other extension, say h from a closure into y, such that h is uniformly continuous, then for each, ये ध्यान से देखिएगा, x in a closure with, then for each x in a closure and, अब देखिए अगर आप x लेंगे in a closure as before there will, चूंकि हमें पता है closure points are limits of convergent sequences, तो इसके corresponding एक convergent sequence होगी, मैं वो भी यहाँ ले रहा हूँ इसी के साथ, for each x in a closure and xn varying from 1 to infinity in a with xn going to x as n goes, xn is going to x as n goes to infinity, we have, और मैं स्टेप बाय स्टेप अब आपसे रीजन पूछूंगा, अभी ऐसा नहीं चलेगा कि आप चुपचाप बैठेंगे यहाँ पर, आपको ना इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना है. What is h of x? If I say that h of x is equal limit, या चलिए मैं इसको पहले ऐसे लिख सकता हूँ, h of limit n goes to infinity xn, क्या ये सही है? Yes, sir. Why? Because x is, इसका plain reason है, because x is the limit of x. So this and this they are equal. Now this is further equal limit n goes to infinity h of xn, ये बताइए क्या? H is uniformly continuous, हाँ, मतलब continuous. because h is continuous at x and xn's are convergent to x. और ये कन्वर्जेंस कहाँ पर है? इन ए क्लोजर, जहां पर h जो h का डोमेन है. तो this, now what is this? This is h of xn. xn's कहाँ से आ रहे हैं? xn's are terms of the sequence. The sequence comes from a, right? So xn, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, it actually belongs to a. So this is h evaluated at a point of a. सही है ना? So therefore it must be equal limit n goes to infinity f at xn. बताइए क्यों? Because आपको ये आना चाहिए. इसका रीजन क्या है? How h of xn is equal to f of xn? दूसरा ये थी. ये क्यों है ये बराबर ये दो क्वांटिटीज? आप सही सोच रहे हैं, शायद आप कुछ कहने जा रहे थे. आप ट्राई करिए, जब गलत नहीं होगा कोई नहीं. हाँ बताइए. Independent of limit. नहीं, H is an extension. is an extension. Extension, because h is an extension.
of f. ठीक, it's an extension of f. So h at a points will be same as f at a points. It's an extension of f from a to a closure. This is the reason that h at xn is same as f at xn. Now what is this limit? अब g की definition देखिए. This is g at x. इसका reason है by the, इसका reason है ये by the definition of g. So क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? आपको दिखा रहा हूं h at x is same as g at x. और ये किन एक्सेस के लिए ट्रू है? For each x in a closure. That means a closure का कोई भी पॉइंट आप लीजिए, h और g they return the same value. क्योंकि डोमेन भी इनका एक क्लोजर ही है, so that means डोमेन के हर एक पॉइंट पर they return the same value. So that means what? They are actually same. Hence g is equal to h या h is equal to g. बेहतर वही है. Hence h is equal to g and therefore अब यहाँ जो हमने ये कहा था ना कि if suppose h is some other function but we are forced to accept that this h ये कोई नया फंक्शन नहीं है, ये असल में वही पुराना फंक्शन है g जो ऊपर हमने क्रिएट किया था. And therefore g is the unique extension of f from a to a. अगर आप इसको आप पिक्टोरियली इसकी जो ये जो थियरम है ना, अगर आप इसको पिक्टोरियली देखेंगे तो इसको आप ऐसे पिक्टोरियली रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसके लिए आपको पहले दो मैट्रिक्स स्पेसेस चाहिए, एक्स डी एंड वाई सिग्मा. ठीक, वाई सिग्मा एंड एक्स डी. एक्स डी मैट्रिक स्पेस पर एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मैट्रिक स्पेस हो सकती है, लेकिन हाँ ये जो है ये कोई ऑर्डिनरी मैट्रिक स्पेस नहीं होनी चाहिए. इट हैज टू बी अ कंप्लीट स्पेस. ठीक, उसके बाद क्या चाहिए आपको? ये रिक्वायर अ सबसेट A of x and a uniformly continuous function which takes this A into this complete space. The theorem says that you can uniquely extend this function f to the boundary also. क्योंकि A क्लोजर में कौन से नए पॉइंट्स आते हैं? A क्लोजर इज A यूनियन बाउंड्री ऑफ A. तो पॉसिबली इसमें कौन से नए पॉइंट्स आ रहे हैं? द बाउंड्री पॉइंट्स. तो बेसिकली ये बाउंड्री पर भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं while maintaining its uniform continuity and there is one and only one way of doing this. ये बस एक ही तरीके से किया जा सकता है. There is no other way because G is the unique extension of F. इसके प्रूफ को आप देख लीजिएगा अगर कोई और क्वेश्चन होगा इसके रिलेटेड. क्योंकि अब होपफुली मैंने इसकी स्ट्रीमिंग करी थी, अब मुझे नहीं पता अगर वो यूट्यूब पर होगी तो मैं आपको वो लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा. आपको जब फुर्सत होगी आप उसे फिर से देखेंगे, लेकिन कल के लेक्चर से पहले ही देखने की कोशिश करिएगा. अगर लेट भी सोना पड़े तो लेकिन इसको एक दफ़ा आज फिर से देख लीजिएगा. अगर फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कल आप बताएंगे. और ये एक्सरसाइज आप ट्राई करेंगे जो ना, ये मैंने कहा गई हो, हाँ ये इसे आप ट्राई करेंगे. अगर नहीं आया तो कोई नहीं, मैं खुद दिखाऊंगा कल. वैसे ही आना चाहिए आपको, ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं. कोई क्वेश्चन है अभी के लिए?
और ये जो थियरम है ना, इसका भी एक कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है। ऐसा नहीं इट हैज अ प्रूफ विच इज थियोरेटिकल, नहीं, इट हैज अ कंस्ट्रक्टिव प्रूफ। प्रूफ ही आपको बता रहा है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एक्सटेंशन जी, है ना। इसमें एक कंस्ट्रक्शन, इसमें पूरा आपको बताया गया है कि आप ये कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इस जी को। और वो जो कंस्ट्रक्शन है आपकी, वो एक वेल डिफाइंड फंक्शन ही देगी आपको, बिकॉज दिस लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द सीक्वेंस। बाकी इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें ऐसे कोई उतना भी नहीं है। आप बस कंटिन्यूटी, क्लोजर की जो प्रॉपर्टी, कंटिन्यूअस मैपिंग्स और क्लोजर की जो प्रॉपर्टीज है, बस वही चीजें आप यूज करते हैं जो हमने पहले ही सीख के रखी है। कोई क्वेश्चन है अभी के लिए? मैं आपकी लेक्चर नोट्स नहीं है मेरे पास ये वन नोट फाइल है, मैं आपको ये दे सकता हूँ, लेकिन ये आपको फिर लैपटॉप पर ओपन करनी है, या आपके मोबाइल में अगर ऑफिस की वन नोट ऐप है तो आप MS ऑफिस की वन नोट ऐप अगर इसमें है तो आप ये ओपन कर सकते हैं। मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको तो दूंगा, मेरे पास है वो कल वाले लेक्चर। चलिए ठीक है, फिर खुदा हाफिज, इंशाल्लाह आप कल मिलेंगे। और इसे देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। अगर ना किसी जगह आपने समझा नहीं होगा, अगर आपको ऐसे शाइनेस फील हो रही है मुझे कम्युनिकेट करने में, आप पर्सनली भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर खुदा हाफिज।